लैपटॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियोस लेके आया हूँ, इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं PWM PCM से रिलेटेड। देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो होगा, PCM सिस्टम रिक्वायर्स रीजनरेटिव रिपीटर्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेस, द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ ऑपरेशंस विच अ रिपीटर परफॉर्म दिस। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट्स आर रीजनरेटिव रिपीटर्स। रीजनरेटिव रिपीटर्स क्या होते हैं? रीजनरेटिव रिपीटर्स एक एम्पलीफायर होते हैं जो कि बूस्ट करते हैं सिंगल स्ट्रेंथ को ट्रांसमिशन मीडिया के साथ। रीजनरेटिव रिपीटर्स जो होते हैं डिटेक्ट्स करते हैं और रीजनरेट करते हैं ओरिजिनल स्ट्रेंथ सिग्नल को, क्योंकि फ्री ऑफ नॉइस होते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन से। सबसे पहले पहला ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहला ऑप्शन क्या देगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ टाइमिंग, इक्वलाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग। Second option equalization, timing and decision making. And the third option is timing, thresholding decision and equalization. And the last option, which is fourth, is threshold, timing and equalization. And the right answer is timing, equalization and the decision making. Before the operation of a degenerative repeaters, we synchronize the signal which comes in a category of timing. Then we equalize, and the last process of a regenerative repeaters are decision making. And the right answer is A, option A, timing, equalization and decision making. Now move on the second question, which is given is, in a PCM system the amplitude levels are transmitted as a 7-bit code words. The sampling is done at a frequency of 10 kHz, the bandwidth of system. जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, एम्पलीट्यूड लेवल्स जो है ट्रांसमिट किया जा रहा है 7-बिट कोड वर्ड से, एंड सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी जो दी हुई है 10 किलोहर्ट्ज दी हुई है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10 किलोहर्ट्ज, सेकंड दिया हुआ 20 किलोहर्ट्ज, एंड सी इज 35 किलोहर्ट्ज, द डी इज 70 किलोहर्ट्ज। नाउ बाय ए सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ ऑफ अ सिस्टम। सरल भाषा में कहा जाए तो हम बैंडविड्थ निकालते हैं सिस्टम की, जो कि इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ 10 किलोहर्ट्ज, दूसरा दिया 20 किलोहर्ट्ज, तीसरा दिया 35 किलोहर्ट्ज, चौथा दिया 70 किलोहर्ट्ज। नाउ वी कैलकुलेट द बैंडविड्थ ऑफ अ सिस्टम। ये सिंपल फार्मूला, वी कैलकुलेट द बैंडविड्थ ऑफ अ सिस्टम। बैंडविड्थ इक्वल टू एन एफ एस, वेयर द वैल्यू ऑफ एन इज गिवन इन अ क्वेश्चन इज 7. The value of n in the formula 7, and the value of fs is given 10 kilohertz. Then the answer is come 70 kilohertz. The right answer is 70 kilohertz. राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो 70 किलोहर्ट्ज होगा, जैसे कि हमने फार्मूला से कैलकुलेट किया है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is given in a PCM the biggest advantages as compared to AM is। PCM में AM से कंपेयर करने पर कौन सा एडवांटेजेस है? पहला ऑप्शन दिया हुआ लार्ज बैंडविड्थ, बी दिया हुआ लार्जर नॉइस, एंड सी दिया हुआ इनएबिलिटी टू हैंडल एनालॉग सिग्नल, एंड द थर्ड ऑप्शन इज incompatibility with the time division multiplex system. And the right answer is large bandwidth, because the PCM system a bandwidth is very large as compared to analog amplitude modulation. Now move on the next question, which is given a signal to quantization ratio is given in a PCM system depend on। SNR जो होता है PCM सिस्टम का वो किस पे डिपेंड करता है? पहला दिया हुआ सैम्पलिंग रेट, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है क्वांटाइजेशन लेवल, थर्ड दिया हुआ है मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ, एंड द ऑप्शंस जो हुए हैं, पहला ऑप्शन जो हुआ 1 2 3, दूसरा दिया हुआ दूसरा तीसरा, और 3 ऑप्शन दिया हुआ सेकंड ओनली, एंड द लास्ट ऑप्शन 3 ओनली। देन द राइट आंसर इज नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल is a right answer on which the SNR of a PCM system depend. Now move on the next question, which is given in a PCM system if a transmission path is very long। जब ट्रांसमिशन पार्ट लॉन्ग होता है तो PCM सिस्टम में हम क्या यूज़ करते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं रिपीटर स्टेशंस आर यूज, पल्स विड्थ में भी यूज, पल्स एम्पलीट्यूड इज यूज, एंड डी इज पल्स स्पेसिंग इज रिड्यूस।
and the right answer is repeater stations are used. Option A. Compression in PCM refers to relative compression of higher signal amplitude, low signal amplitude, and a low signal frequency or a higher signal frequency. Compression is a technique in which the signal is compressed at the transmitter end and the expand in the receiver end. Compression is a combination of two words, which is compressing at the transmitter and the expanding at the receiver end. And the right answer is A, high signal amplitude. Now move on a second question. The bandwidth required for a transmission of a PCM signal increases by a factor of when the number of quantization level is increases 4 to 64 by a simple formula. Bandwidth equal to NFS, where N is a given N equal to 4 and the value L equal to 4. L जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, and we find the value of N is equal to 2, and when the N is 64 the value of N is equal to 6. Then the compression from the 4 to 64, there is a trace of a factor which is increasing the bandwidth of the transmission of a signal when we increase the 4 to 64. Now the next question, part multiplexing techniques to the product used to transmit two PCM signal in opposite direction over a same transmission line. The method we use in this scenario is TDM. TDM is used when the two opposite PCM signal is transmitted over a same transmission line, and the right answer is TDM. The next question, an audio signal is to be transmitted digitally is the system best suited for a good fidelity. पहला ऑप्शन दिया हुआ 8-bit PCM, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 13-bit PCM, and the third is 30-bit PCM, and the last is PCM system with non-uniform quantizer. And the right answer is PCM system with non-uniform quantizer. Next question is the main factor that determines the ratio of a reconstructed PCM signal is the. पहला ऑप्शन है सिग्नल बैंडविड्थ, सेकंड है पल्स रिपीटेशन रेट, सी है पल्स एम्पलीट्यूड, और डी इज द नंबर ऑफ बिट यूज फॉर क्वांटाइजेशन. नंबर ऑफ बिट यूज की जाती है क्वांटाइजेशन के लिए, वो मेन फैक्टर होता है रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल का एक्यूरेसी चेक करने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द differential pulse code modulation signal is true. The sum of a message signal sample bit is protection is quantized. The message signal sample is directly quantized and its protection is not used. And the C option is given that the message signal is sample and the random signal is quantized. And the last option is the difference of message signal sample with this quantization is quantized. And the correct answer is D. The difference of a message signal sample with its protection is quantized. Now move on the next question, the signal to quantized noise ratio in a 8-bit PCM system. First option is given, सिग्नल SNR जो होता है हमारा n-bit PCM सिस्टम पे, वो डिपेंड किस पे करता है. तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं डिपेंड अपॉन दिस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो हम यूज़ करते हैं. सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ n नंबर ऑफ बिट ऑफ अ PCM सिस्टम उस पर इंडिपेंडेंट होता है. सी दिया हुआ है इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n, जब वैल्यू ऑफ n बढ़ाते हैं तो उसकी नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करते हैं, तो हमारी जो SNR जो है वो इंक्रीज करता है. एंड द थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n इट्स डिक्रीजेज. करेक्ट आंसर इज सी, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n. जब हम n की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है. ठीक है. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन इन द स्लाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्स मॉड्यूलेशन इज एनालॉग. पल्स मॉड्यूलेशन में से जो हुआ है कौन सा उसमें से एनालॉग मॉड्यूलेशन है. तो सबसे पहले उसमें चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं. पहला ऑप्शन दिया हुआ PCM,
दूसरा दिया है डिफरेंशियल PCM एंड सी इज अ PWM एंड डी इज अ डेल्टा. नाउ the first option PCM, which is used for the digital modulation conversion from the analog signal to a digital signal. Now second is the differential PCM. In this type of PCM we modulate the signal and the difference between the two bits. And the C option is PWM, pulse width modulation. It is an analog modulation in which the pulse of the width of the pulse is modulated with the carrier signal. Now the next question, which of the following require a synchronization signal? Single channel PPM system, PAM system, PDM system, all of the above. And the right answer is single channel PPM system is used for the synchronization signal. PAM signal can be demodulated by using a low pass filter alone, a SMIC trigger followed by a low pass filter, a differential followed by a low pass filter, and the D is a clamper circuit followed by a LPM. And the right answer is D, a clamper circuit followed by a low pass filter. Which of the following pulse modulations are digital? The option पहला is PCM, second is differential PCM, and C is a PWM. And the correct answer is PCM and differential PCM is a digital modulation techniques first which use in a digital modulation. Then the right answer is 1 and 2. A PM signal can be detected by using the pulse amplitude modulation. सिग्नल जो होता है इसको हम किसके द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है? पहला ऑप्शन दिया है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सेकंड दिया हुआ इंटीग्रेटर, सी दिया हुआ बैंड पास फिल्टर, एंड डी इज अ हाई पास filter. And the correct answer is integrator. By the use of integrator we can detect the PM signal. Okay, now move on the next question, which is given in a slide. Which of the following requires a synchronization signal? कौन सा modulation system synchronization signal को require करता है? If it's a repeated question in a slide, then the right answer is single channel PPM system. Single channel PPM system में एक synchronization signal की यूज होता है. ठीक है. And then the last question is the bandwidth of n-bit binary coded PCM signal for modulated a signal having a bandwidth of f hertz. f frequency का सिग्नल जो कि है n-bit की n-bit का PCM सिस्टम है, फ्रिक्वेंसी दी है f hertz, तो उसकी बैंडविड्थ निकालना है. तो by use of simple frequency we calculate the bandwidth of any n-bit PCM system. VW is equal to N into Fs. Then the right answer is N into Fs. The option is C is the right answer of this question because we calculate the frequency bandwidth of the n-bit PCM system is formula N equal to Fs. Now move on the next question, which is given in a PCM system. The number of quantizational level is 16 and the maximum signal frequency is 4 kHz. The bit transmission rate is, then we calculate the bit transmission rate for this question. The number of quantization level is 16, n की वैल्यू 16 दी हुई है और जो मैक्सिमम जो हमारा सिग्नल फ्रिक्वेंसी है 4 kHz है. एंड द बेसिक फ्रिक्वेंसी इज 2 kHz and the bandwidth calculated VW equal to N into Fs, and the Fs equal to 2 and N is the 16, and the 16 into 2 is calculated the 32 kHz, and the right answer is C. Again goes there 32 kHz is the right answer, or we can write 32 kilobits per second. Now these questions are very important for the upcoming exams like DFFCL, ONCG related to electronics and electrical branch. For more types of this type questions, you can subscribe my channel, share and like, and for more questions and update or PDFs of this type of videos are uploaded on our Telegram channel. You can also join the Telegram channel. Thanks. आज के लिए इतना ही. कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ.